Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Hope you all are fine and in a good health. Today we will learn about our new unit, which is Unit 3, a memorable letter. Let's see. Unit 13 हमारा पेज नंबर 88 से लेकर 89 तक है. अ मेमोरेबल लेटर इसका नाम है. ऑब्जेक्टिव्स आपको स्क्रीन पर गिवन है कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप किन किन चीज़ों की लर्निंग के काबिल हो जाएंगे, यानी कि ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट में सीखने वाले हैं. मेमोरेबल लेटर जो है, इसका जो मतलब बनता है वो होता है एक यादगार ख़त. अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या चीज़ें दी गई हैं. पहली लाइन जो हमें दी गई है वो है everyone has an event, a moment or an incident that changes one's life. In my case, it came through a letter. I still remember the day when I received my dad's letter, who lived in Saudi Arabia. After reading this letter, I realized that parents are a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. We should always love and respect them. Again, I will read it and will tell you the meaning of this whole paragraph. हमारे पास जो पैराग्राफ गिवन है, everyone has an event, a moment or an incident that changes one's life. In my case, it came through a letter. I still remember the day when I received my dad's letter, who lived in Saudi Arabia. After reading this letter, I realized that parents are a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala and that we should always love and respect them. हर एक की ज़िंदगी में एक लम्हा और एक वाक़या होता है जो इसकी ज़िंदगी बदल देता है. मेरे मामले में ये एक ख़त के ज़रिए आया. मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे अपने अब्बू का ख़त मौसूल हुआ जो सऊदी अरब में रहते थे. ये ख़त पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वालिदैन अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत हैं और हमें हमेशा इनसे मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए. ये तो हमारा था पेज नंबर 88. अब हम चलते हैं पेज नंबर 89 पर. लेट्स रीड हर फादर्स लेटर. आइए इसके वालिद का ख़त पढ़ते हैं. ऊपर उन्होंने एड्रेस वगैरह गिवन है, तो हम अस्सलाम वालेकुम से शुरू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. आई एम फाइन टू. आई वॉन्ट टू शेयर विद यू एन इंसिडेंट दैट आई हेयर्ड इन द फ्राइडे प्रेयर सरमन. यहाँ तक मैंने रीड आउट किया है, ठीक है. इसकी मीनिंग देख लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है तुम अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक होगी. मैं भी ठीक हूँ. मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो मैंने जुम्मे के खुतबे में सुना था. आगे क्या दे रहा है. एट द टाइम ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला there was a young man named Alqama. He was very diligent in obeying Allah subhanahu wa ta'ala by engaging in prayer and fasting and spending on charity. Then he fell ill and his illness became serious. His wife went to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and told him about his illness. Illness means बीमारी. यहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है. यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान था जिसका नाम अलकमा था. वो नमाज, रोज़े और सदक़ात में मशगूल रहकर अल्लाह की अताअत में सरगर्म रहता था. फिर वो बीमार हो गया और इसकी बीमारी बढ़ गई. इसकी बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने खावंद की बीमारी का बताया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 साथियों को बुलाया और इनसे कहा कि इस अलकमा के पास जाकर कलमा दोहराएं. वो इसके पास गए that we will read now.
The messenger of Allah called his two companions and told them to go to him and tell him to repeat the shahada. जो मैंने अभी पढ़ा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने कंपेनियन से, अपने साथियों से, कि वो अलकमा के पास जाएं और उससे कहें कि वो कलमा दोहराए. They went to him and found him. अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम. यहाँ आ गए हम. दोबारा से हम इसको मार्क कर लेते हैं. कहाँ पर थे हम? ये रहा. ठीक है. They went to him and found him in tongue was unable to say it. At this they came back and told everything to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He asked, is either of his parents alive? His companion said, messenger of Allah, his mother is, but she is very old. यहाँ तक पढ़ा है हमने. अच्छा, अब क्या हुआ कि वो उसके पास गए और उसे मौत की अजियत में पाया, यानी कि वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था. उन्होंने उसको कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने को, उन्होंने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने को कहा, लेकिन उसकी ज़बान बोलने से कासिर थी, यानी कि वो बोल नहीं पा रहा था. फिर वो वापस आए और सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या उसकी वालिदैन में कोई हयात है? तो उन्होंने क्या बताया कि उसकी माँ है, लेकिन वो बहुत बूढ़ी है. जिन लोगों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा के पास भेजा था, उन्होंने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि वो तो हालत मर्ग में है, यानी कि वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है, तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या उसके वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, उसकी वालिदा ज़िंदा है, लेकिन वो बहुत बूढ़ी औरत है. फिर क्या हुआ? The messenger of Allah sent her a message asking if it was convenient for her to come to him. तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेज भिजवाया और कहा अलकमा की मदर को, अलकमाज़ मदर, कि क्या वो उनके पास आ सकती हैं, यानी कि क्या उनके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाना कोई मसले का सबब तो नहीं है, क्या वो बआसानी तशरीफ़ ला सकती हैं, उनकी ऐसी कंडीशन है. फिर क्या हुआ? द प्रॉफिट रिटर्न हर ग्रीटिंग एंड सेड टू हर, उम्मे अलकमा, टेल मी द ट्रुथ, फॉर अदरवाइज अल्लाह विल रिवील द ट्रुथ टू मी. What is the situation concerning your son Alqama? She replied, messenger of Allah, he prays and fasts much and spends a great deal on charity. अब क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत को, यानी कि जो अलकमा की मदर थी, उनको पैगाम भिजवाया कि क्या वो आसानी से उनके पास आ सकती हैं. अलकमा की माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और सलाम किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और कहा, उम्मे अलकमा, मुझे सच बताओ वरना अल्लाह मेरे सामने सच को ज़ाहिर कर देगा. आपके बेटे अलकमा के बारे में आपकी क्या ख़यालात हैं? उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया, वो नमाज़ पढ़ता है और रोज़ा रखता है और बहुत ज़्यादा खैरात पर ख़र्च करता है. ये काम अलकमा. फिर क्या हुआ? The messenger of Allah said, are you pleased with your son? She said, messenger of Allah, I am angry with him. He asked her the reason. She replied, messenger of Allah, he has preferred his wife to me and has disobeyed me. The messenger of Allah said, Alqama, surely your anger has prevented Alqama's tongue from saying the shahada. अब क्या हुआ? इसने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी वालिदा ने बताया, वो रोज़े रखता है, वो खैरात करता है, सब कुछ करता है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम अपने बेटे से खुश हो? उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, नहीं, मैं उससे नाराज़ हूँ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वजह पूछी. उसने जवाब दिया, वो अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता है और मेरी नाफरमानी करता है.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علقمہ یقیناً آپ کی ناراضگی نے علقمہ کی زبان کو شہادت کے کلمات کہنے سے روک رکھا ہے. After that, what we have? He then turned to Bilal ibn Rabah and said, Bilal, go out and collect firewood. She asked Messenger of Allah, what do you plan to do? The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala replied, I will burn your son in front of your eyes. She said, Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, he is my son. My heart cannot bear you burning him in front of me. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, Alqamah, Allah's punishment is more severe and lasting. Therefore, if you want Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him, reconcile with him by the one in whose hand is my soul. The prayer, fasting and spending on charity which he has done are of no benefit to Alqamah. یہاں تک ہم نے ریڈ کیا ہے. اب کیا ہوا؟ بڑی خوبصورت کا بات ہے، بہت خوبصورت قصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال ابن ربا کے پاس گئے اور کہا، بلال باہر جاؤ اور لکڑیاں اکٹھی کرو. علقمہ کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں تمہارے بیٹے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا دوں گا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ میرا بیٹا ہے، میرا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے میرے سامنے جلا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علقمہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے تو آپ اس سے صلح کر لیں. خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نماز، روزے اور خیرات جو اس نے کی کا علقمہ کو کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ اس سے ناراض ہیں. اب ہم یہاں سے ریڈ آؤٹ کریں گے. یہ ایز لانگ ایز تک میں کر چکی ہوں، اس کے نیچے سے اب ہم ریڈ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ والی لائن یہاں سے میں ریڈ کروں گی ابھی. اچھا، اب یہاں کیا ہے؟ She said, Messenger of Allah, I call upon Allah and His angels and the Muslims who are present to be my witness that I am pleased with my son Alqamah. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, Bilal, go to him and see whether he is now able to say La ilaha illallah or not. It may be that Alqamah is saying something for my sake which is not in her heart. Bilal went to his house and while entering the door, he heard Alqamah saying La ilaha illallah. کیا ہوا کہ اب ہمارے پاس آگے یہ چیز آ گئی، تو آپ اس سے صلح کر لیں. خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان نہیں، یہ میں نے بتایا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نماز، روزہ اور خیرات کا علقمہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس سے ناراض ہیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں اور اس کے فرشتے اور وہ مسلمان جو یہاں موجود ہیں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، یعنی کہ علقمہ کی مدر نے سب کو گواہ بنایا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے خوش ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اس کے پاس جاؤ اور دیکھو آیا کہ وہ لا الہ پڑھنے کے قابل ہوا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ علقمہ میری وجہ سے کہہ رہی ہو جبکہ اس کے دل میں ایسا کچھ نہ ہو. بلال اس کے گھر گئے اور دروازے سے داخل ہوتے ہوئے انہوں نے علقمہ کو لا الہ پڑھتے سنا. اب کیا آگے ہمارے پاس آ گیا؟ بلال ریمارک، اٹ از شیورلی ٹرو دیٹ وائل علقمہ's mother was angry with him, his tongue was tied, and now that she is pleased with him, so his tongue is freed. Alqamah died the same day. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said the funeral prayer for him. My dear daughter, I wanted to share this heart-touching incident from Islamic history with you to advise you that we must always be. یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے، پورا میں نے ریڈ آؤٹ کر لیا ہے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، یہ یقیناً سچ ہے کہ جب علقمہ کی ماں اس سے ناراض تھی تو اس کی زبان
اور اب جب اس کی ماں اس سے خوش ہے تو اس کی زبان کھل گئی ہے۔ علقمہ اسی دن فوت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میری پیاری بیٹی، میں اسلام کی تاریخ میں سے یہ دل کو چھو جانے والے واقعہ تمہیں نصیحت کرنے کے لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ respectful and obedient to our parents. However, we must not obey them if they order us disobey Allah subhanahu wa ta'ala or his messenger. Then other than this, they deserve our utmost attention and respect. Your father, Adnan Ahmed. اب یہاں پر اس کے فادر اس کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنے والدین کا احترام اور اطاعت کرنی چاہیے، تاکہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم دیں تو ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ ہماری توجہ اور احترام کے بہت زیادہ مستحق ہیں۔ تمہارا والد عدنان احمد۔ یعنی کہ اس پوری کہانی میں والدین کے عزت و احترام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت کہانی تھی، بہت خوبصورت قصہ تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا اس کی چیپٹر کی ریڈنگ میں۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے جس میں ہم اس چیپٹر کی ورڈز میننگ کریں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔